rotation, translation, scaling, reflection, and sharing. Now, in today's class, we are going to start with second chapter of Rogers, which is in your syllabus actually. Okay? This chapter will comprise of transformation only, and that too, this transformation is only regarding your two-dimensional transformation. Chapter 3, you will move on to projection, and in that same chapter 3, you will have three-dimensional transformation and थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन तो कुछ होता नहीं है मतलब 2D transformation we will be covering in chapter 2 and 3D transformation we will be covering in chapter 3. Obviously, when I have to set the question paper and I know that my student knows how to work with a 3 cross 3 matrices, like 2 dimension में x, y है, तो आप उसको होमोजीनियस बनाओगे तो वो आपका एक्स वाई कॉमा एच हो जाएगा. तो दैट मीन्स आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 होगा. अब जब हम थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो आपका पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से. अब जब इसको होमोजीनियस बनाओगे तो वो आ जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू या एच बोलो उसको. तो दैट मीन्स कि तब आपका जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट इज नाउ 4 क्रॉस 4. सो when I am setting the paper as an examiner, why will I test you on a two-dimensional point? I will always test you on a three-dimensional point. So be prepared that your questions will be on three-dimensional transformation matrices. Okay, have I made myself clear, Ramesh? Ramesh? Yes, ma'am. But before we move on to chapter 3, we need to know two dimensional transformation. So we are doing chapter 2. My screen is visible to everybody. Mathematical है. आपको ये सब्जेक्ट करके भी ये टॉपिक करके भी अच्छा लगेगा because you will make more you will be when you try to visualize what it is being shown through the matrices on your screen as a graphical object being moving from here to there or it is being resized, you will really love this topic. Now it says, what is transformation? Transformations are used to position objects, to shape objects, to change viewing position, or even to change how something is being viewed. Please look at these points again. Position objects हो गया translation, shape objects हो गया scaling, to change the viewing positions हो गया rotation, and to change how something is being viewed कि आप अभी मिरर एक्स वाई एक्सिस में y माइनस पे खड़े हैं और अब आप इस पे एक्स वाई एक्सिस पे y प्लस पे खड़े हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है. अभी जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें आपको ये समझ में आ गया था मैट्रिसेस में कहाँ पे क्या चेंज करने से रिफ्लेक्शन होगा या शेयरिंग होगा. मोर प्रिसाइजली डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो आपके पास स्केलिंग या शेयरिंग आएगा. स्केलिंग आएगा और अगर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो आपके पास शेयरिंग आता है. अभी इसी चीज को इस बुक में राइट फ्रॉम स्क्रैच कैसे शुरू किया है. Now see how a point is represented in two dimension by its coordinates. ठीक है. Two ways to represent a point will be either you can represent it as a column matrix or you can represent it as a row matrix. ठीक है. Now moving further, given a matrix A and the transformation matrix T, then the new point B will be equals to A into T, where T is equals to A, B, C, D, which is where T is called as the transformation matrix. अब जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो नया x स्टार y स्टार क्या होगा. पुराने x y को आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया. when you multiply it you get
ax plus cy as the first element and by uh, bx plus dy as the second element, and this will be now one row matrix. The initial coordinates of x and y have been transformed into x star and y star, where x star is equals to ax plus cy and y star is equals to bx plus dy. There are four main types of transformations that can perform in two dimension: translation, scaling, rotation and shearing. Now, यहाँ तक क्लियर है प्रख्यात? प्रख्यात यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब टी आपके पास ये है. इसमें ए एंड डी जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है और सी और डी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है. सो लेट्स कंसीडर less than 1. Greater than 1 will lead to increasing the size, whereas less than 1 will lead to decrease in size of the object. But if the diagonal elements are attaining negative values, then in that case reflection will occur. Pratika, यहाँ तक clear है बेटा? Yes, ma'am.
Then you make changes to the off diagonal elements. That means A and D, which are diagonal elements, are set to 1, and off diagonal element is having some value, B is having some value, C is made as 1. When you now multiply it, look at carefully, you will get x plus 0. And x into 1 plus y into 0 will give you x. That means x remains unchanged. And when you multiply it with this column, you will get bx plus y. So look at this. Y star जो है उसमें क्या हो रहा है, पुराने y में y plus bx हो रहा है. So y has been changed, and that change is depending upon x axis, some factor of x axis. This is called as shearing. The x coordinate of the point is unchanged, while y star depends linearly on the original coordinates. This is effect is called as shearing. Obviously, when both the elements will be, अच्छा जब आपके पास सिर्फ C zero है, C non zero है और B zero है, then you will get shearing in x direction. This shearing, please see it correctly, this shearing x में you are adding some factor of y. So the x-axis is being the change at the x-axis is being dependent upon some factor of y-axis, right? Transformation on origin. If the point itself is at origin, then in that case, whatever your transformation matrix is, you will again get origin. Thus, origin is invariant under a general 2 cross 2 transformation. Again, I repeat that origin is invariant. Invariant का मतलब है you cannot change the origin with the help of 2 cross 2 transformation matrix. This is a limitation, and it will be overcome by use of homogeneous coordinates. तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की अगर एग्जाम में आपके पास रमेश यहाँ तक क्लियर है बेटा जितना अभी बोला है रमेश Yes, ma'am. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाई डू यू नीड टू यूज द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स then there are three reasons for it. First reason, that transformation matrices should all be made in the form of multiplication. Otherwise, if you don't introduce a homogeneous coordinate, then your translation will lead to having an adder because it will involve matrix addition apart from matrix multiplication. Second reason is when the point to be represented is out of your viewing window. In that case, in order to uh, bring the point inside your viewing region, you use homogeneous coordinates. And the third point is we use homogeneous coordinates because your origin is invariant under 2 cross 2 transformation matrices. Now, moving further. ये है टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अ लाइन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स. A straight line can be defined by two position vectors which specify its endpoints. That means a line moving from A, starting from A and ending at B. A and B, there are two representations. Here, let us talk about only this representation. Here, the line L is being defined by two vertices, the starting vertex A and the ending vertex B. And your new line L star will be equal to where your original line is multiplied with the transformation matrix.
Look at this example. A straight line is there where A is equals to 0, 1 and B is equals to 2, 3. And the transformation matrix is 1, 2, 3, 1. Now, how do you find out? There are two ways here. First, what you need to do is that A will be multiplied with T. A की value है 0, 1. So the matrix 0, 1 is multiplied with this T matrix. And you get A star as 3, 1. I hope I don't need to explain you the matrix multiplication each time. Then B star is equals to B into T, where B is equals to 2, 3. And T is being multiplied with this, so you get your new B star as 11, 7. So your line has been now transformed from AB to A star B star. There is another way to solve this problem, in which instead of having your matrix multiplication twice, you will have your matrix multiplication only once. How do you do that? That instead of transforming point A and point B, you transform the entire line. That means L into T kiya hai, where A is written like this 0, comma 1 in the first row, and B is written like in the second row 2, comma 3. The entire thing is multiplied with the transformation matrix. You get the same transformation points which you got in the previous example. That is A star is 3, comma 1 and B star is 11, comma 7. I hope you understand that we will stick to this representation, because instead of a line, if we have a polygon with, say, suppose n vertices, all you need to do is that you should have a matrix of n cross 2 dimension, which will be multiplied with 2 cross 2. ठीक है? I hope यहाँ तक clear है. सही? Is it clear till here? Yes, ma'am. Now, this is midpoint transformation. Midpoint किसका? Line का. I'm just reading first this and then I will explain you with an example. A 2 cross 2 transformation matrix transforms a straight line into another straight line. ये अभी आपने एग्जाम्पल में देखा है. एक स्ट्रेट लाइन पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो एक अलग ही आपके पास नई स्ट्रेट लाइन आती है. That is, points on the second line have one-to-one correspondence with the points on the first line. हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या किया था? हमने लास्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट उठाया लाइन का और एंडिंग पॉइंट उठाया लाइन का, उनके नए एंड पॉइंट्स निकाल लिए. जब हमारे पास ए स्टार और बी स्टार आ गया, तब हमने अपना डीडीए लाइन के एल्गोरिथम को कॉल करके वहां पे एक नई लाइन बना दी. यही किया था. तो इससे क्या हो रहा था कि जो लाइन पे पॉइंट्स होते हैं, सेकंड लाइन पे जो पॉइंट्स है उनकी वन वन करस्पॉन्डेंस है फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स में. So we have already seen it to be true for the endpoints. Now let us check it for midpoint of the line. दो केसेस में इसको सॉल्व करेंगे. केस 1 से हमारे पास कुछ आंसर आएगा, केस 2 से हमारे पास कुछ आंसर आएगा, and we will show that since the answer from case 1 is equals to case 2, so the the statement holds. केस 1 में क्या करेंगे आप? You will apply the transformation to the line AB. तो A स्टार B स्टार आ जाएगा. अब A स्टार B स्टार का आप नया मिड पॉइंट निकाल लीजिए. Find the midpoint of the new transformed line, that is M star. इसको इक्वेशन 1 की तरह लेबल कर दो. अब केस 2 निकालिए. केस 2 में क्या करेंगे आप? Instead of transforming the line, you will find the midpoint of the line AB, that is M. And then you apply the transformation to this original midpoint in order to obtain the new midpoint, that is M star. And you, in both the cases, you show that M star is equals to N star. Okay? So we see that in both the cases, transformed midpoint is same.
Thus, midpoint of the line AB transforms into midpoint of line A star B star. Thus, your topic की heading midpoint transformation. You are trying to justify this statement. Midpoint of line AB transforms into midpoint of line A star B star. Therefore, a one-to-one correspondence between the points of the line AB and A star B star is assured. Now let us move to this first derivation, then followed by this simple derivation, we will move on to your practical exam. यहाँ तक क्लियर है सबको अभी? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, here, here, you have to, consider this line. Look at this diagram first. The line is AB, where the midpoint is M. आपने A को A स्टार पे पहुंचाया, B को B स्टार पे पहुंचाया, और M को आप कह रहे हैं कि वो M डैश पे आ रहा है. You need to consider a straight line between A, which is represented by x1, y1, and B, which is represented by x2, y2. Let us try to transform this line using a general 2 cross 2 transformation matrix. T है आपके पास A, B, C, D. Then A star B star क्या हो जाएगा? आप लाइन को A B को T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. That means you will write here x1, y1 representing point A and x2, y2 representing point B. When multiplied with the transformation matrix, you will get this value ax1 plus cy1 and so on the other four values. Now, this is x1 dash, x1 star, y1 star, and x2 star and y2 star respectively. When you find out the midpoint, तो x m star and y m star क्या होता है? मिड क्या होता है? एंड पॉइंट्स के समेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यू विल हैव x1 स्टार प्लस x2 स्टार डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 स्टार प्लस y2 स्टार डिवाइडेड बाय 2. अब आपके पास ये सारी क्वांटिटीज है, सो पुट इट हियर इन दिस मैट्रिक्स and rearrange it. What you will get is a into x1 plus x2 by 2 plus c into y1 plus y2 by 2, and similarly the other element. Label it as equation 1. The second case is that you find out the midpoint of the original line. Original line है का midpoint हो जाएगा x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. When you multiply it with the transformation matrix, you will get the exact same equation which you have got in equation 1. Then, एग्जाम में आपके पास इस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी. ए की वैल्यूज है 0,1, बी की वैल्यूज है 2,3 और टी है आपका 1, 2, 3, 1. फर्स्ट केस में आप क्या कर रहे हैं? केस 1 में लिख रहे हैं ए बी इज मल्टीप्लाइड विथ टी. सो आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, नया पॉइंट आपका ये आ गया. यही हमने अभी एग्जाम्पल में किया था. 3,1 बना 11,7. इसका मिड पॉइंट लिया तो आपके पास आंसर आया 7,4. अब आप क्या करो? केस 2 में ओरिजिनल लाइन का मिड पॉइंट निकालो. ओरिजिनल लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज 0 प्लस 2 divided by 2 and 1 plus 3 divided by 2, that is 1,2. Now transform this original midpoint to the new midpoint and you will get again 7,4. So this is how you will prove your theorem here. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आ सकता है. यहाँ तक सही क्लियर है? सही, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आपकी ये जो है ना, ये वाली स्लाइड, दिस इज द फोटो पिक्चर ऑफ योर बुक का क्वेश्चन, दैट इज रॉजर्स. ऐसे जितने भी पेजेस आएंगे प्लीज अंडरस्टैंड ये रॉजर की बुक में से है. यहाँ पे भी वेर एवर इट इज नेसेसरी, इंटायर बुक
को इंटायर चैप्टर को एक्सप्लेन न्यूमेरिकली किया गया बट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस. So you will not get the question language, you will not get it in this book. So इसका question क्या बनता है? You have a line AB defined by the vertices this and this. Transform the line with the transformation matrix T equals to this, and show that the midpoint of the original line transforms into the midpoint of the new line. So this is what is the question की language, ठीक है, which you will not get book के अंदर, ठीक है. Now moving on to the next है transformation of parallel lines. इसमें क्या है, when two parallel lines are transformed using a 2 cross 2 matrix, transformation matrix, the resulting lines remain parallel. तो मतलब इसमें क्या प्रूव करना है, parallel lines remain parallel after transformation. अब इसको कैसे करना है, to consider two lines which are parallel to each other between the endpoints AB and CD. अब देखो A के एंड पॉइंट्स हैं x1 y1 और B के हैं x2 y2, ठीक है. इसी तरह से C और D के भी होंगे, उसकी लेबलिंग की हमें जरूरत नहीं है. अब क्यों जरूरत नहीं है, since we say that AB is parallel to CD, that means that their slope is same. So instead of calculating the slope of CD, we can calculate the slope of AB, and we can say that the same slope holds for CD. अब स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आपने क्या किया, नए लाइन को निकाला ट्रांसफॉर्म करने के बाद, तो आपने लिया t इंटू x, ठीक है. तो ABCD is multiplied with x1 y1 and x2 y2. अब जब आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो अब आपके पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ जाएगा. इस मैट्रिक्स से आपने निकालना है अब नया स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अब m डैश दैट इज न्यू स्लोप, ट्रांसफॉर्म्ड स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1. तो ये है y2 माइनस y1, ये है y1 अपॉन x2 माइनस x1. इनको रीअरेंज किया. जब रीअरेंज किया, फर्दर रीअरेंज करने के बाद यू गेट दिस फॉर्म b प्लस d इंटू m अपॉन a प्लस c इंटू m. दैट मीन्स जो नया m डैश है वो पुराने m डैश पे डिपेंड कर रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है. Since this purana wala m is same to be line for line AB and CD, so this new m dash will also be same for the new lines A dash B dash and C dash B dash. Why? Because this new m dash is depending upon ABCD, that is the transformation matrix, which remains same for the both the lines, and m, which is also same for both the lines, because in questions it is, in the question it is given that AB is parallel to CD. तो that means m dash जो है वो आपका दोनों लाइंस के लिए सेम रहेगा. मूव यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है संतोष, संतोष. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, तो अब moving on to the next slide. Since the slope m dash is independent of x1 x2 y1 y2, and since m a b c and d are same for EF लिखा है, सॉरी यहाँ पे CD है, for CD and AB,
it follows that M dash is also same for C dash, D dash and A dash, B dash. Thus, parallel lines remain parallel after transformation. In other words, we can say that parallelograms transform into other parallelograms. अब इसको एग्जाम में न्यूमेरिकल के थ्रू पूछा जाता है आपसे. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम नेटवर्क है आपका. सब समझ आ रहा है तुम लोग को, तो क्या बात है. अब तो मन हट गया भाई पढ़ने का, अब नहीं पढ़ा जाएगा. Class is over, I guess. अबे मन हटने वाला क्या? नाइस. Hello, mic testing 1 2 3. Am I audible? Yes, you are audible, Chirag. Thank you.
Hello, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ तक सुना था अभिनव? अभिनव कहाँ तक सुना था? हाँ जी, am I audible? मैम वो जहाँ पे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो वाला, वहां तक सुना था। क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली पे कौन सा क्वेश्चन? मैम शायद इससे पिछला वाला स्लाइड। यस मैम, यही इस वाले पे। ये नो मैम, इससे आगे एक क्वेश्चन जहाँ पे। यस मैम, ये ना, तो यहाँ बात हो रही थी, ये पूरी स्लाइड सुन ली थी आप लोगों ने? ये रीअरेंजिंग ऑफ द मैट्रिक्स सुन नो लिया था? मैम, मैम आप ये स्टार्ट ही करें। शुरू ही हुआ बस। अच्छा, चलो दोबारा करते हैं। देखो, अभी पहला क्वेश्चन आपने किया था ऑन मिड पॉइंट ऑफ लाइन। दूसरा क्वेश्चन किया था आपने कि पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा ये है कि इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर यू कैन राइट इट एज y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। अब दो लाइंस है तो y इज इक्वल्स टू m1 x प्लस b1 and y is equals to m2x plus b2. Now you can formulate these equations as m1x plus y equals to b and m2x plus y equals to b. ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल राइट इट एज x comma y and the matrix is minus m1 minus m2 1 comma 1 and this will be equals to b1 b2. The point here is that it can be written in the form as matrix x multiplied with matrix m, it will give you matrix b. If a solution to this pair exists, then the lines will intersect, otherwise the lines are parallel. So here xi is equals to xi comma yi. When you take the matrix from LHS to RHS, then this will be equals to b into इनवर्स ऑफ m. इनवर्स ऑफ m का आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी. इट इज समथिंग adjoint of a matrix divided by the determinant of the matrix, if I am not wrong. So m inverse जब आप खोलेंगे तो using that formula it will come out to be this. तृष्णा यहाँ तक क्लियर है बेटा? तृष्णा, यस मैम। ये डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, देखो. सो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस इज xi जो है दैट इज xi yi is equals to b into m inverse. b है b1 b2 और m inverse है ये. जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द रिजल्ट एज दिस b1 b2 upon m2 m1 and some quantity here. ठीक है. Now, if these two lines are now transformed using a general 2 cross 2 matrix given by the transformation matrix as ABCD, then they will have some form like y star is equals to m1 star x star plus b1 star and similarly the second equation. That means where your m star mi star is equals to b plus d into mi upon a plus c into mi. Just look at this formula again. ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था. ये नहीं किया था कि m जो नया वाला है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ए बी सी डी एंड द ओरिजिनल m. उसी को जनरलाइज्ड फॉर्म में IH टर्म के हिसाब से लिखा है mi स्टार इज इक्वल्स टू b प्लस डी एम आई अपॉन a प्लस सी. और ये जो bi स्टार है this is equals to bi into d minus cmi star.
जब आप यहाँ पे एम आई स्टार, ये जो ऊपर वाला एम आई स्टार है, इसकी वैल्यू डालेंगे और रीअरेंज करेंगे, तो यू विल गेट द क्वांटिटी एज बी आई स्टार इक्वल्स टू बी आई इंटू ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस सी इंटू एम आई। अब यहाँ पे एक हिच है कि ये वाली इक्वेशन आई कहाँ से? ये इक्वेशन की आपके पास डेरिवेशन बुक में नहीं दे रखी है और ना ही मुझे कहीं और मिली है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज दैट कि आप इस लाइन को तो याद करके जाइएगा। ऑल यू कैन डू इज दैट, इसको याद करके जा सकते हैं या अपने किसी मैथ्स के टीचर से हेल्प ले सकते हैं कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइंस की बात करते हैं तो ये बी आई स्टार यहाँ पे हम कैसे पहुंचते हैं। Otherwise, you will really have to muck this up. ठीक है? Then, moving further. Sorry. Hmm. So, the intersection of the transformed line is obtained in the same manner as that of untransformed line. अब आपके पास जो लाइन थी वो थी एक्स आई स्टार इंटू बी आई स्टार। अब एक्स आई स्टार और बी आई स्टार में यही आपने वैल्यूज डाली तो आपके पास ये इक्वेशन आई। फ्रॉम द लास्ट टू इक्वेशंस, मतलब यहाँ पे जो आपके पास, सॉरी, एम आई स्टार है, बी आई स्टार है और आपके पास ये था ना इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, ओरिजिनल लाइंस का एक्स आई वाई आई, वो है B1 अपॉन B2 अपॉन M2 अपॉन M1। ठीक है, M2 माइनस M1 एंड सम क्वांटिटी हियर। वही चीज को यहाँ पे हमने बस स्टार के साथ लिखा है, B1 स्टार माइनस B2 स्टार अपॉन M2 स्टार माइनस M1 स्टार, और वही चीज यहाँ पर। अब यहाँ पे B1 स्टार, BI स्टार और MI स्टार के फॉर्मूले को डालना है। वो फॉर्मूलेज है ये MI स्टार का और BI स्टार का। ठीक है, वो जब आपने डाला इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास एक्स आई स्टार की वैल्यू जो आई उसको आपने लिखा इक्वेशन 1। अब now you return to the untransformed intersection point xi yi and apply the same general transformation matrix to it। तो x और y, xi yi के साथ जब आपने t को मल्टीप्लाई किया तो एक्स आई वाई आई क्या था, आपने निकाला था पीछे b1 माइनस b2 अपॉन m2 माइनस m1 multiply and this term multiplied with this you get another equation which you label it as equation 2। Comparing equation 1 and 2, they are identical. Consequently, the intersection point transforms into another intersection point। I know that the derivation is lengthy, so instead of explaining you the derivation again, let us first move to an example, and if there is again doubt, then we will move back to this example to the derivation again। विभू, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. You have to consider two lines AB and EF with the endpoints as A equals to this, B equals to this, E equals to this, F equals to this, and T equals to this। अब अगेन इसमें क्वेश्चन क्या है कि यू नीड टू प्रूव दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस विल इंटरसेक्ट इवन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकालनी है एंड यू टू शो दैट इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। अब ए बी जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 3 एंड 5/3। देखो ए था हमारा यहाँ पे -1 और बी है 3, 5/3। तो पूरे मैट्रिक्स ए बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली ई को लिख सकते हैं। टी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। we know that from derivation xi जो है that is equals to b1 minus b2 upon m2 minus m1 and this quantity। अब यहाँ पे पहले आपको m i's निकालने हैं और b i's निकालने हैं।
तो पहली इक्वेशन की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट AB. AB देखो, हमारी जो लाइन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस b. m जो है यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो AB जो है उसको हम लिख सकते हैं, AB के केस में m1 कितना हो जाएगा. m1 will be y2 माइनस y1. y2 a था हमारा y2 that is 5 by 3 minus y1 that is 3 upon x2 minus 1 minus of minus x. So here you have, sorry, AB that is 5 by 3 plus 1 upon 3 plus 1. So here what you get is your m1 comes out to be 2 by 3. And then EF आपने निकाला, EF से आपने निकाला m2. अब m2 आपने निकाला, फिर से आपने सारी क्वांटिटीज डाली, तो दैट कम्स आउट टू बी -1. अब यहाँ पर m1 आ गया आपके पास 2/3 और m2 आ गया -1. इसी तरह से सिमिलरली आपने नेक्स्ट लाइन के, अब आपको निकालना है b. b निकालने के लिए यू नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस b को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमने क्या लिखा, b इज इक्वल टू माइनस mx प्लस y. अब ये जो आपके पास क्वांटिटी है m की वैल्यूज जो है, ये आपको मालूम है, ये इस तरह से हम लिखते हैं इसको, दैट b1 b2 इज इक्वल टू xy इंटू माइनस m1 माइनस m2 1,1. अब इसी में वैल्यूज डालिए. -m1 आपका आया था, m1 आया था आपका 2/3, तो ये हो गया -2/3. m2 आया था -1, तो यहाँ पे क्वांटिटी हो गई अब आपके पास +1. अब ये क्वांटिटीज आपके पास है. अब आपने क्या करना है, लाइन ए बी उठानी है. ए बी को लिख सकते हैं, किसी भी लाइन को लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू -mx प्लस y. ए बी को लिख सकते हैं b1 इज इक्वल टू -m1 x प्लस y. अब यहाँ पर जब रीअरेंज करेंगे, ये लिख सकते हैं एक्स वाई और इसको लिख सकते हैं -m1 एंड 1. अब आपके पास x और y है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन टू यू एज -1 -1. m1 की वैल्यू आपने निकाली थी 2/3, तो आ जाएगा -2/3. 1 remains as such, तो आपके पास b1 की क्वांटिटी आ गई -1/3. सिमिलरली EF से आपने निकाला, अगेन यहाँ पे आपको m2 चाहिए जो आपने निकाला था -1. बाकी नंबर्स आपके वही हैं, तो आपने यहाँ पर b2 की भी वैल्यू निकाल ली 1. तो आपने अभी तक क्या किया है, m1 और m2 निकाला और b1 और b2 निकाला. दोनों लाइंस की जो इक्वेशन का सॉल्यूशन था वो हमने डेरिवेशन से निकाला था, xi yi being equal to these quantities. इसमें आपके पास सारी वैल्यूज है m1 m2 b1 b2 एंड अगेन ओनली दीज 4 वैल्यूज. ये चारों वैल्यूज आपने निकालनी है, तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है 4/5 एंड 1/5. नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आ जाएगा, xi जो है ये, अब आपके पास आ जाएगा 4/5 1/5 मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स, यू विल गेट द ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है. इसके साथ जब आपने इसको ओरिजिनल इंटरसेक्शन पॉइंट को ट्रांसफॉर्म किया, तो यू विल गेट द न्यू पॉइंट एज 1,1 एंड यू लेबल इट एज इक्वेशन 1. ये था. नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइन गिवन ओरिजिनली टू यू. अब लाइन आपको ओरिजिनली ए बी दी हुई थी -1 -1 3 एंड 5/3. टी दिया हुआ था 1 2 1 एंड -3. व्हेन यू ट्रांसफॉर्म इट, यू गेट अ न्यू लाइन a star b star as this, और इसी तरह से e star f star as this. Again you will find the intersection point by the previous procedure.
Instead of using the previous procedure, what we are using is this equation. Y minus y1 into x2 minus x1 is equals to x minus x1 upon y2 into y2 minus y1. अब इस इक्वेशन में लेट अस डू इट फॉर a स्टार b स्टार, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 है आपके पास 1, ठीक है, इंटू x2 माइनस x1। तो x2 और x1 की वैल्यूज यहाँ पे डालें। x the quantity you don't know, so plus x minus of minus 2 will give you x plus 2, and then y2 और y1 में वैल्यूज आपने डाली। सिंस y2 एंड y1 में आपके पास वैल्यूज डालने के बाद आया आपके पास 1 माइनस 1, तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज ओनली दिस LHS पार्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू गेट दैट y इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली EF को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये वाली क्वांटिटी है x2 माइनस x1 समहाउ टर्न्स आउट टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस 1 है, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई तो y वाली क्वांटिटी भी आपकी उड़ गई यहाँ से, तो यू आर लेफ्ट विद x वाली क्वांटिटी इन RHS साइड। सो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी हियर आफ्टर सॉल्विंग एज 1। So you label this as equation 2. Now from this we can say that the intersection points are same in both the cases, so the transformation of intersected lines result in another set of intersected lines. I repeat here, आपने दो केसेस में इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट केस में आपने जो लाइन थी उसको ट्रांसफॉर्म किया और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, ट्रांसफॉर्म्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। सेकंड केस में आपने इंटरसेक्टेड लाइंस को का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और उस पॉइंट को सिर्फ आपने ट्रांसफॉर्म किया। जब आपने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो बोथ केसेस में आपके पास जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट आया है दैट कम्स आउट टू बी 1,1। सो हैव आई मेड क्लियर टू माई सेल्फ? अश्विन यहाँ तक क्लियर है? अश्विन यहाँ तक क्लियर है बेटा? थोड़ी सी डेरिवेशन लंबी है, इसको करने के लिए एक से ज्यादा और तरीका भी हो सकता है, तो आप एक बार इसको देखिएगा। आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू। आपको कोई और आसान तरीका नजर आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो जस्ट लेट अस नो, ठीक है? नाउ मूविंग फर्दर, now we are moving to next topic, that is rotation. You have to see that originally your point is at P, which is represented by x comma y by an angle phi. Now you rotate it by an angle theta so that P is moved to P dash, which is represented by x dash y dash. And with respect to the origin, now your angle will be theta plus phi. If you see it with respect to trigonometry, you create a triangle here with P extending to y axis, so x axis, so you will get that P is equals to xy, which is represented by r cos theta and r sin theta. अब P dash जो है, P dash is represented by x dash y dash, where this is P is represented now as r cos theta plus phi plus theta and r sin phi plus theta. Now this is cos of a plus b and sine of a plus b. When you open it, you get the result as this: r cos theta cos phi minus sin theta sin phi, and here as r cos theta sin theta plus sin phi cos theta. अब इस definition में if you see this r cos theta only till r cos theta, so this r cos theta is actually equals to x, and यहाँ पे आपके पास जब r से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो r sin phi is equals to y. So that means you can easily write this as x cos theta minus y sin theta.
And similarly here, you can write it as x sin theta plus y cos theta. तो अब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये चीज ऑब्टेन करने के लिए यू कैन राइट इट एज एक्स वाई मल्टीप्लाइड विद cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था एज सच कि रोटेशन का मैट्रिक्स ये है. नाउ by looking at this slide you can now easily justify why that equation why that matrix is this. यहाँ तक क्लियर आ गया है अंशिका? Yes, ma'am. Now, some of the common cases of rotation, ये तो एक्चुअली मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि सीधा ट्रिग्नोमेट्री की एंगल की वैल्यू ही तो डाल रहे हो ना, है ना. रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट counter clockwise about the origin. Please remember all these rotations are with respect to the origin. If you have to do it with respect to some particular point, then you have to do more than rotation. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. पहले हम पॉइंट को ट्रांसलेट करके वापस ओरिजिन पे लाएंगे, फिर ही हम रोटेशन करेंगे और फिर उसको उतना ही अमाउंट ट्रांसलेट करके आगे लेके जाएंगे. So rotation by 90 degree counter clockwise about the origin will be theta में आप 90 डिग्री की वैल्यू डालें तो you will get the matrix as 0 1 minus 1 0. Similarly, rotation about 180 degree, rotation about 270 degree will result in these matrices. Why we are discussing these matrices? You need to notice that in above all the above cases, what you find is that determinant of t is equals to 1. Y is the reason. डिटर्मिनेंट क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. एंड इफ यू सी हियर you will get the value always as cos square theta plus sin square theta in each of these cases, and it results in always 1. So the determinant is always equals to 1 in the case of rotation. In general, transformation with a determinant identically equal to plus 1 yields to pure rotation. I repeat again, in general, अगर जिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओरिजिनल लाइंस को या व्हाटएवर पैरेललोग्राम को, अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है, तो in that case it is identically equal to pure rotation. एग्जाम्पल ये आपका जो हम्म, वो क्वेश्चन होता है ना फर्स्ट वाला जिसमें ऑल द पार्ट्स आर इक्वल, वहां 2 1 नंबर का ये पूछा जाता है. शो दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिव्स अ प्योर रोटेशन. तो करना क्या है? जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो और दिखाओ दैट इट इज इक्वल्स टू प्लस 1. यहाँ तक क्लियर है अजय? अजय क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का ही आता है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जो है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ रोटेशन. Reflection is a special case of rotation of 180 degree about a line in xy plane passing through origin. For example, says about y equals to 0, that is about x axis. तो अब x axis में है तो आपके पास यहाँ पे y ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास 1 0 0 -1. And about x equals to 0 है अगर, that is along the y axis, then it will be -1 0 0 and 1. Two more matrices you need to remember, that if you are trying to reflect about the line y equals to x, y equals to x है, so then in that case you will have the transformation matrix as 0 1 and 1 0. And if it is y equals to minus x, then it will be 0
-1, -1, 0. Now, if you see here, ये जो मैट्रिसेस आपने यहाँ पे सारे पढ़े हैं, इसमें क्या है? Each of the reflection matrix has a determinant that is identical to -1. In general, transformations with a determinant identically equal to -1 will yield pure reflection. ठीक है? तो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट -1 है तो प्योर रिफ्लेक्शन है, +1 है तो प्योर रोटेशन है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. If two pure reflections about a line passing through the origin are applied successively, then the result is a pure rotation. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑब्वियसली जब आपने दो रिफ्लेक्शन करी, पहली रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट आपका -1 आएगा, दूसरी वाले का भी -1 आएगा, क्योंकि दोनों प्योर रिफ्लेक्शन है. जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास +1 हो जाता है. तो दैट मीन्स आई रीड द लाइन अगेन. If two pure reflections are applied, then the result is a pure rotation. ठीक है? Is that clear to everybody? हाँ जी, अनिल यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Now, look at this example. You have to consider a triangle ABC which is shown in figure 2.7, and you reflected about x-axis and then reflected about the line y equals to -x. Specifically, the result of reflection is about about the x-axis. तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पहले आपने y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस पे इसको ट्रायंगल ये है ना x, ठीक है, ये x को मल्टीप्लाई कर दिया y इक्वल्स टू 0 के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ. अब जो आपके पास रिजल्ट आया ये 4 -1 5 -2 4 -3, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया. एक बार आप ये देखो, खुद से देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. हाँ जी, am I audible? Am I audible? Hello, Ajay, am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी. So here what you do is that then after this point you reflected about the line y equals to -x. तो y equals to -x वाले मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया. Now what you find here is that when if you rotate by uh,
the angle theta equals to 270 degrees to the original triangle, then also you get the same result. 270 डिग्री के साथ जब इसको आपने रोटेट किया था, then also you are getting the same result. So the question एग्जाम में क्या आएगा आपके पास, ये रोटेशन और रिफ्लेक्शन का मिक्स क्वेश्चन है कि consider a triangle ABC with the coordinates as this. First reflect it about x-axis and then reflect it about the line y equals to minus x-axis. Show that the resultant transformation is equal to the actual transformation of the triangle with a rotation about origin with an angle of theta equals to 270 degrees. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू स्टेप्स करके इसको इक्वेशन 1 लेबल करना है, ये स्टेप करके इक्वेशन 2 लेबल करना है, एंड देन यू हैव टू से दैट सिंस द two equations are coming out to be the same transformed triangle, so the statement, hence the statement. तो ये आपका 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है सबको? भूमि क्लियर है बेटा? Ma'am. ठीक है. अब नेक्स्ट वी हैव हियर रिफ्लेक्शन. ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात करते हैं. गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T, it is said to be orthogonal if its inverse is equals to its transpose. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसका इन मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है. ट्रांसपोज आपको मालूम है निकालना बड़ा आसान है, सिर्फ आपको रो कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स करना पड़ता है, which takes time. The advantage is that determining the inverse of matrix is more computationally expensive than determining its transpose. So अगर आपके पास ये transformation matrix ये है, on applying this transformation we rotate or reflect the point P to P star by an angle theta. Now in order to move back to P, we need to rotate / reflect it by an angle minus theta. So that means we will apply the inverse transformation. तो आपके पास जो T inverse है वो ये है. दोबारा आप माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, फिर आप T inverse दोबारा करेंगे with positive theta. So note that here T into T inverse is always equals to identity matrix. And here we have another property of orthogonal matrices, that T inverse is equals to T transpose. So in general, the inverse of a pure rotation matrix, that is the one with the determinant equal to +1, is its transpose. ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा उसको ट्रांसपोज कर देंगे rather than finding the actual inverse of the matrix. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर स्केलिंग. स्केलिंग क्या होता है? when you are trying to change the size of the object. अभी तक हमने दो चीजों की बात करी थी. पहली चीज ये थी कि हम कह रहे थे कि आपके पास यहाँ पर स्केलिंग में या तो साइज बढ़ता है या साइज घटता है. स्केलिंग के लिए हमें डायगोनल एलिमेंट्स पे चेंजेस करने होते हैं. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरोस रहते हैं. अगर वो क्वांटिटीज जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 से ग्रेटर है तो साइज इमेज का बढ़ेगा. अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स 1 से कम है तो इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा. इसके अलावा आपके पास दो तरह की और स्केलिंग्स हैं. वन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्केलिंग एंड अनदर इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग.
लेट अस टॉक अबाउट जब हमारे पास दोनों डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम है, देन इट लीड्स टू यूनिफॉर्म स्केलिंग। और जब दोनों डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं है, देन इट लीड्स टू नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। Note that if A is equals to B, A is equals to D, and B and C are zeros, then a uniform scaling occurs. And if A is not equals to D and non-diagonal elements are still zero, then a non-uniform scaling will occur. For a uniform scaling, when both A and D are equal to each other and they are greater than 1, then a uniform expansion will occur. That is, your figure will get larger in size. And if A and D are equal to each other, but both of them are less than 1, then a uniform compression will occur. That is, the figure gets smaller. Non-uniform expansion and compression will also occur depending upon whether A and D are individually greater than 1 or less than 1. ठीक है? So here what you see is that, for example, if T is equals to 2002, then your image will be 2 times enlarged. This is called uniform scaling. But if the magnitudes are unequal, then it may lead to distortion. यहाँ तक क्लियर है सबको स्केलिंग का? स्केलिंग तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब हो गया है 10:45. So sorry, 10:32. So I'll leave you here. Now you have your class with Vandita ma'am, I suppose. है ना? मैम ने मैसेज दे दिया था. हाँ. तो उसके बाद अब हम मिलेंगे 1 बजे. हमारा प्रैक्टिकल है 1 से 3. On the same link we will meet at 1 PM. ठीक है? हाँ जी, भूमि क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को, अब प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट अ नेम हु विल आंसर, एवरीबडी हैज टू आंसर दिस. आप लोगों के पास एक फॉर्म आया है कॉलेज से भरने के लिए कि आर यू इंक्लाइंड टू अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस इन द ऑफलाइन मोड? Yes, ma'am. तो भरा है बेटा आप लोगों में से किसी ने? हाँ ma'am. अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी. What is the general consensus? Do you wish to come for the offline practicals? मैम क्या हाँ जी, मैम बोलो. आवाज नहीं आई आपकी. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स के लिए आना चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इस मोड में प्रैक्टिकल्स आपके हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 4 सब्जेक्ट्स? Let's be very practical and let's be very real with each other, है ना? ऐसा देखो, कोई वो मैंडेटरी तो है नहीं, लेकिन आप लोगों की राय जानना जरूरी है. पॉइंट ये है, खाली प्रैक्टिकल्स के लिए आना थोड़ा अलग सा होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए आना. हाँ हाँ, कौन रहा है क्योंकि जी? मैं चिराग बोल रहा हूँ. हाँ चिराग, बोलो बेटा. हाँ, क्योंकि मैम खाली क्योंकि मैम वहाँ अकोमोडेशन वगैरह लेकर रहना पड़ता है, क्योंकि हॉस्टल तो है नहीं कॉलेज का कोई. हाँ 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 हाँ. अच्छा, तो आप खाली में से कितने लोग हैं जो नॉन डेलीआइट्स हैं? मैम बहुत सारे. नहीं, आप बहुत जो सारे. जितने प्रेजेंट है इसी में बता दो मुझे. नाम बोलते जाओ. नॉन डेलीआइट्स. मैम ज्ञानेश, Krishna. चिराग. मैम अनिल, रमेश. कृष्णा एंड चिराग. और अनिल, I'm अनिल. Pratika. कृतिका. मैम रमेश. रमेश. और कोई? बस, बाकी सब डेलीआइट्स हैं. मैम विभू, मैम ललित, धीरे धीरे सोच सोच के बोल रहे हो. ललित एंड विभू.
हाँ, प्रकृति एंड अश्विन, इतने सारे बाहर से आते हो? मैम संतोष। यस मैम। मैम ये तो ये अश्विन तो हैं? क्या अश्विन मैम, अश्विन तो यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं इसको? नहीं है भाई। अच्छा ठीक है भाई, वो गाजियाबाद है, ठीक है। अच्छा ठीक है। मेट्रो चलने का भी तो देखना हाँ जी, हाँ पड़ेगा जी। ना। हाँ बेटा, हाँ। कम्यूट करना तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट प्रेफर कि आप अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी, जो फॉर्म दिया है उसमें रीजनिंग स्पेसिफाई करने की जगह है कि व्हाई यू डोंट विश टू कम फॉर द प्रैक्टिकल्स? नहीं मैम ऐसा कुछ No, नहीं, ma'am. जैसा मैं सिर्फ। उसमें यस और नो मैम ही है। 1 किलोमीटर दूर तो घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। और मैम अगर यस है तो पेरेंट्स का वो दे सकते हो आप, क्या कहते हैं, कंसेंट फॉर्म, बस। Consent. Yes, ma'am. हम्म। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप लोग टू द बेस्ट ऑफ योर प्रेफरेंसेस डू फिल इट, क्योंकि जो भी बेस्ट होना चाहिए वही आप लोगों के लिए किया जाना चाहिए। मैंडेटरी तो बना नहीं रहे इसको, है ना? एंड देयर इज नो पॉइंट कि हम 2 जगह पे क्लास लें, आधे जो बच्चे ऑनलाइन मोड में आ रहे हैं उनके लिए, और जो आधे ऑफलाइन कॉलेज पहुंच रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो काइंडली हैव अ डिस्कशन विद योर सेल्फ्स, एंड पेरेंट्स से भी बात करो और आपस में भी डिस्कस करो कि क्या बेस्ट है तुम लोगों के लिए, सो दैट यू फिल दैट फॉर्म विद बेटर प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब हम 3 बजे मिलेंगे। सो